Assalamu alaikum. So, the second part of the presentation, we will be building a daemon. Now, what is a daemon process first of all? As शज़ेब भाई ने पहले भी बताया, daemon processes कुछ background process होते हैं कि जो periodically wake up करते हैं operating system के request पे, and then they execute something the task that the daemon process requests to. सबसे पहले अगर मैं daemons का एक चीज दिखाता चलूँ आपको, तो we will open the Linux terminal and we will run the command ps-aux. ये कमांड क्या करेगी कि ये सारे प्रोसेसेस को लिस्ट डाउन कर देगी जो इसके अंदर पड़े हुए हैं, इस वक्त रनिंग है सिस्टम के अंदर. सो इफ आई लेबल दिस, यू विल सी कि ये सारे चल रहे हैं डीमंस. किसी जगह एक नजर भी आ जाएगा, लुक दिस करेक्टली, ये देख रहे हैं इसके एंड पे एक डी है, होम टास्क डी. सो दिस रिक्वायर्स कि ये एक डीमन प्रोसेस है जिसकी आईडी 29 है. तो इनफ विद दिस, और हम जगह बिल्ड करते हैं अपने डीमन प्रोसेस को. सो लेट मी चेंज द डायरेक्टरी फर्स्ट. टर्मिनल के इंस्टेंस को कर देते हैं बंद. Close the terminal instance and then go into this folder that we had and then the OS project. Okay, so यहाँ ना दो चीजें हैं कि नंबर वन तो हम ये कर सकते हैं demons.cpp भी, but for this purpose we will build another file, demons2.cpp. Created, and yes it is. So let's open it in our gedit editor and start building the daemon. मैं आपको ना साथ साथ वॉक थ्रू करता जाऊंगा कि इसमें लाइक क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिपेंडेंसीज को इंपोर्ट कर लेते हैं. iostream #include stream #include sys/i notify.h. अच्छा, इस लाइब्रेरी को हम इसलिए ऐड कर रहे हैं, दिस विल रेज नोटिफिकेशन इवेंट. ये नोटिफिकेशन इवेंट से क्या मुराद है ये मैं बाद में जब कोड हम करके दिखाएंगे उस वक्त मैं शो करूंगा कि ये क्या है. #include unistd.h. Let's define a global variable which is the pwd, और ये है हमारे पास open the terminal. This is the pwd. So this is the present working directory. Let's copy that, then go into. So this is our present working directory जो हम नीचे यूज करेंगे अपने कोड के लिए. And let's define some event variables. And let's define another variable which is the buffer length. और ये होगी 1 MB की, almost 1 MB, and multiply with the event size plus 16 bits. So these are the two things. And now let's write a simple file handling function, void log. This namespace log event, and this receives a string event, and it simply writes it to the file. So we will have an ofstream object, ofstream log file, which will be the directory.log, और इसको हम ओपन करेंगे append mode में. ओपन करेंगे इसको, ठीक है. And then we'll write a function if log event log file dot is open. तो ये एक built-in function है ofstream class का, which tells के the file is open or not. We will log the event in the file, the event which was coming from this event, and then end the line, and then close the log file, else it is going to be an error message.
else it is going to be an error message. So that should do it. Now let's build the daemon function. So first of all, हम दो वेरिएबल बनाएंगे, int fd which is the forward directory and wd which is the watch directory. बेसिकली ये फ्लैग वेरिएबल्स हैं, बट इस पर्पस के लिए ये इंटीजर वेरिएबल्स में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न टाइप्स हमारे पास -1 भी आती हैं. तो अगर हम वो यूज करें बूलियन वेरिएबल्स, तो दे कैन नॉट होल्ड देम. So this is why we are using integer variables. ये -1 वाला मैं चीज शो करूंगा कि कहाँ पे आएगी. And this is going to be event of len. Variable event of len. Yes. So first of all हम क्या करेंगे, हम चेंज द वर्किंग डायरेक्टरी. अगर ये नहीं है, क्योंकि यहाँ चेंज करने का मकसद ये है कि डेमन प्रोसेस asynchronously वर्क करेगा. So for making it work asynchronously, whenever it is called, we have to change the working directory to the one we are watching right now. तो इस वजह से हम इसको चेंज करेंगे explicitly to where the executable is located. And this will be if the ch directory एक फंक्शन है, से change directory वो है iStream के अंदर है, which tells us the directory change. और ये अगर तो directory successfully change हो तो ये 1 रिटर्न करेगा if 1 is true, और ये अंदर चल जाएगा, else ये -1 रिटर्न करता है. Now you might have known कि मैंने ऊपर क्यों fd ये यूज किए हैं. एंड कहाँ हमने वॉच करना है, हमने करना है pwd which is the present working directory. अगर तो सक्सेसफुल है, is not successful, so then we are going to simply copy this error message, then change its text to change working directory. तो ये सिंपल एरर मैसेज चेंज हो गया. नेक्स्ट अप हम ये करेंगे कि हम नोटिफाई के इवेंट्स रेज करवाएंगे. सॉरी, fd इज इक्वल टू आई नोटिफाई डॉट इनइट. ओके, अब मैं जरा यहाँ इसका मकसद बताता चलूँ कि क्या है. सो बेसिकली हमारा जो हम वॉच मोड लगा रहे हैं, वी आर वॉचिंग थ्रू a notification. So basically what I'm saying is कि जब भी कोई चीज डायरेक्टली में डिलीट होगी या चेंज होगी या अपडेट होगी या उसके साथ डायरेक्टली में कोई भी चेंज होता है, तो वो एक नोटिफिकेशन आता है. जैसे कि अगर आपको याद हो, मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगर यहाँ पे तो नहीं है क्योंकि हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है. अगर मैं इसको कर दूँ मूव टू ट्रैश, ठीक है, अगर मैं करता हूँ तो वो एक नोटिफिकेशन इवेंट आता है कि फाइल हैज बीन डिलीटेड या टास्क 3 डिलीटेड अनडू. हम इस चीज को कैप्चर करेंगे जो ये इवेंट रेज हो रहा है, ये जो बार आ रहा है, और इसके थ्रू हम अपना काम करेंगे. ठीक है, और अगर ये नोटिफाई का इवेंट रेज नहीं होता, इफ fd इज लेस देन 0, सो वी विल सिंपली स्पीक यही एरर मैसेज. इनिशियलाइज द नोटिफाई. तो हम इसका मतलब है कि नोटिफाई ठीक तरीके से नहीं चलना, एंड वी विल कैंसिल दैट. अब इसके बाद अगर नोटिफाई हो गया, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ वॉचिंग द डायरेक्टरी. wd will be equal to I notify dot add watch. This is a built-in function in the I notify API. So this is taking fd, the present working directory as parameter, and the file mods. So हम इसे भी फिलहाल दो mods में watch करेंगे, which is the create and which is the delete. और अगर ये unsuccessful है, और अगर ये unsuccessful है at this point, so this is this. Again हमारा वही error message, not watch the directory. Close that. इससे पहले हम जरा अपने कोड को भी एक क्विक सैनिटी चेक कर लेते हैं. Let's make a quick sanity check. So g++ daemons 2.cpp daemons 2.
This should load. Wait, where's something error? We have an error. And that's it. अच्छा, ये ओके। सो यहाँ पे ना असल में हो ये रहा है कि वो हमसे ये स्ट्रिंग डायरेक्टली पाथ में मांग रहा है एज अ पॉइंटर। सो इट हैव टू पेस्ट दिस। दिस शुड वर्क फाइन। चेंज डायरेक्टली पे भी सेम वही आ रहा है। सो इट इज सेइंग कि हम एक स्ट्रिंग का पॉइंटर देना चाह रहे हैं उसे, बट वी आर एक्सपेक्टिंग गिविंग इट अ स्ट्रिंग वेरिएबल। So this should work fine. I think it has worked fine here. And then we are going to run this object file. और यहाँ पे अगर हम ये देखें तो ये output 1 आ गया. Like our code is up till this point our code is working exactly right. इसके बाद अब हम daemon build करेंगे. And how we would build the daemon is, सबसे पहले हम daemon process create करेंगे using a fork. Daemon process, and then this would be eid, e process id is equal to fork. तो फोर्क के कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोगों को पहले से आते होंगे, अगर नहीं आते तो यू कैन वॉच दिस बिकॉज वो इस वीडियो के स्कोप में नहीं है। the id is less than 0, close the brackets, and then this will be, अगर तो फोर्क नहीं हुआ so this will be an error, not fork else, अगर तो वो greater than 0 है तो we will return, जो greater than 0 है तो we will exit the daemon process. This is all pretext. Now, is point forward, we are going to build the loop which powers the daemon. This is the loop that is going to watch the directory for changes, and this is the loop that is going to log events to the file. Changes in the file. So we are going to write while true. This is going to be a forever loop. So the first part we are going to write int length. Length is equal to read from the forward directories integer buffer. The directory changes. So basically ये जो length का variable है, this is more of like a holding variable which actually watches, which actually keeps a track of watch events. It isn't actually watching, it just keeps a track of watch events. And इसके बाद अगर डायरेक्टली रीड हो गई है, सो लेट्स इटरेट। अच्छा, डायरेक्टली रीड होने का प्रोसेस ये है कि जैसे जैसे इवेंट रेज होंगे वो इस बफर के अंदर आते जाएंगे और हम इस बफर से एक एक इवेंट पकड़ेंगे एट अ टाइम और उसको देखेंगे कि उसके साथ क्या हो रहा है। नोटिफाई इवेंट पॉइंटर, ठीक है, और किस चीज को टाइपकास्ट करे, और ये टाइपकास्ट करे बफर के उस वेरिएबल पे जिस पे आई खड़ा हुआ है इस टाइम में। ठीक है, अगर तो इवेंट की लेंथ, अगर जो पॉइंटर का इवेंट है वो पॉजिटिव इंटीजर है, इट्स ग्रेटर देन 0, इट इज ट्रू 1 होती है, तो इसका मतलब कि हमारा इवेंट सक्सेसफुली कैप्चर हुआ है जो भी लाइक हो रहा है इस टाइम पे। मास्क, अगर तो वो इन क्रिएट में था कि फाइल में कोई इवेंट क्रिएट हुआ है, सो yeah, what we're gonna do, can string let's name it name event equal to
equal to file created and okay, plus and name, and we are going to convert it into a string. We're going to convert it into a string and then call the log event on this name event. ठीक है कि जो event हुआ है उसको log कर दे कोड के अंदर. And else if ठीक है अगर तो वो हुआ है अगर तो वो हुआ है delete अगर तो वो हुआ है delete हुआ है तो सेम चीज बट फॉर डिलीशन. इसके बाद इस पूरे इफ के बाद आई को चेंज करो इस इवेंट फाइनली. अगर तो ये कोड पूरा ही अनरीचेबल था इसके बाद विच इज आई थिंक दिस इज द इंट मेन ब्रैकेट. तो इससे ऊपर रिटर्न 0. इसका मतलब था हमारा कोड अनरीचेबल था. ओके ग्रेट, लेट्स टेस्ट दिस शैल वी. सो हम जाते हैं अपनी इसको अगेन कंपाइल करते हैं शीट कंपाइल एंड Daemons 2. इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे. लेट्स लिस्ट डाउन द प्रोसेसेस फर्स्ट. तो यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा कि Daemons 2 ये वो वाला डेमन है जो हमने अभी बनाया. एंड फॉर द क्विक सैनिटी चेक हम यहाँ पे वापस जाते हैं अपनी डायरेक्टरी के अंदर एंड वी गो इनटू दिस डायरेक्टरी डॉट लॉग. इसका मैं स्ट्रक्चर आपको एक दफा दिखाना चाहता हूँ क्या है. ये देख लें, इसमें 13 लाइन्स है इस टाइम पे और लास्ट लाइन ये फाइल डिलीटेड है. जैसे मैंने टेस्ट रन में Daemons डिलीट किए थे. लेट्स लिस्ट डाउन अ डायरेक्टरी touch hold dot txt. Let's name it demo.txt, and let's list down the directory. That directory, wait, let's clear the file first, and then cat directory dot log. So यहाँ पे ये नजर आ रहा होगा created demo.txt. Let's remove this file rm demo.txt and then list this command again so you can see create date. So this kind of finishes our demonstration on Daemons. This is how they work. और इसमें अच्छा एक चीज और भी है. Let me open this and let me remove this executable. Because Daemon is all about a background process, right? Daemons 2. And then if we directory.log, तो यहाँ ये उसको लैब करेगा. मैं अब अगर कोई चीज टच करता हूँ touch demo.txt and then this command again, it will still record that. क्योंकि यही आइडिया था. क्योंकि अगर वो डिलीट भी कर दिया उसकी एग्जीक्यूटेबल को, the daemon is process is still running in the background. So that marks it all for our Daemons presentation. I hope it has been right. And if any questions, let me know in the comments. Thank you so much.